Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about multiple choice questions with answer. So let's start the video. So your first question is the unit of force in SI system of unit is SI means system international. So your option 1 dyne, option B kilogram, C Newton and D watt. So over here right answer is option C Newton. The unit of force in SI system of unit is Newton. Right? So यहाँ पे आपको याद रखना है SI means system international. Next question is 1 kg force is equal to. So over your option A 7.8 Newton, B 8.9 Newton, C 9.8 Newton and D 12 Newton. So over here right answer is option C 9.8 Newton. So 1 kg force is equal to 9.8 Newton. Next question is a force while acting on a body may. So option A change its motion, B balance the forces already acting on it, C. Give rise to the internal stresses on it, and D. All of this. So over here right answer is option D. All of this. Right? Next question is concurrent forces are those forces whose line of action. Option A lie on the same line, meet at one point, meet on the same plane, and D none of these. So over here right answer is option B meet at one point. So concurrent forces are those forces whose lines of actions meet at one point. Next question. The forces whose lines of action are parallel to each other and act in the same directions are known as. Option A coplanar concurrent forces, B coplanar non-concurrent forces, C like parallel forces, and option D unlike parallel forces. So over here right answer is option C like parallel forces. The forces whose lines of action are parallel to each other and act in the same direction are known as like parallel forces. The friction experienced by a body when at rest is known as. Option A static friction, B dynamic friction, C limiting friction, and D coefficient friction. So over here right answer is option A static friction. सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी की बात हो रही है और वो बॉडी कौन सी कंडीशन में है रेस्ट यानी कि रेस्ट कंडीशन में होगा तभी उसके ऊपर कौन सा फोर्स यानी कि फ्रिक्शन अप्लाई होगा स्टैटिक फ्रिक्शन राइट। सो ये आपको याद रखना है स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स जब भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होगा तभी उसके ऊपर जो भी फ्रिक्शन अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the friction experienced by a body when in motion is known as A. Static friction, B. Dynamic friction, C. Limiting friction, and D. Rolling friction. So over here right answer is option B. Dynamic friction. So यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बॉडी है वो कैसी कंडीशन में है इन मोशन यानी कि गति में है राइट। तभी उसके ऊपर जो भी फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड होगा
उसे हम बोलेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। तो सिंपल आपको याद रखना है, हमने अगले क्वेश्चन में देखा कि जब भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, और बॉडी जब भी मोशन में है तो उसको हम डायनेमिक फ्रिक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio of static friction to dynamic friction is always, so option A equal to 1, B less than 1, C greater than 1, and D none of this. So over here right answer is option C greater than 1. The ratio of static friction to dynamic friction is always greater than 1. Next question is the unit of angular velocity is option A meter per minute, B meter per second, C revolution per minute, and D all of these. So what your right answer is option C revolution per minute. तो आपको याद रखना है the unit of angular velocity is revolution per minute, यानी कि angular velocity का unit क्या रहेगा revolution per minute. Next question is जूल इज द यूनिट ऑफ, यानी कि जूल किसका यूनिट है। सो ऑप्शन ए फोर्स, बी वर्क, सी पावर, एंड डी एनर्जी। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी वर्क, यानी कि जूल किसका यूनिट है वर्क का। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।